I'll move forward. Now, Mr. Pulare has asked one question. If we are looking at 60 KLD and above, the space requirement is larger than conventional civil-based STP. Am I correct, sir? Right, sir. Okay. Right, sir, right. The answer here is whenever we are doing something in prefabricated, there is a constraint called liquid depth. In the liquid depth in our largest tank, that is the tanks that we make in our factory are 2.4 meters diameter, and the liquid depth maximum is 2.3, right? And the tank height maximum is 2700, 9 feet. Why we are restricting there is anything larger than 2700 mm cannot be transported in India. It is typically called ODC, over dimension cargo, right? And trucks are designed only for 8 feet size. If it is larger than 8 feet, transporting it will be a huge cost and huge effort. So for this reason, we can only increase lengthwise. Diameter, tank diameter and water column depth cannot be increased. So this is a constraint for us. Whereas if you go for a civil based STP, we can go for tanks even with 4 meters liquid depth. अगर आप conventionally देखते हैं STP ETP में, most of the time tanks are made in 4 meters depth. See why we right. There your space requirement will be lower because you are going for deeper tanks. Right. But there is a compromise. Sir, we have to make a compromise. And please understand one thing. Easy यही STP. अपना जी हाँ, प्लीज गो अहेड. हाँ, यही अपना अपन कन्वर्ट कर सकते हैं सिविल में सर, अपना डिजाइन कर सकते हैं सर. Okay. We can make in civil, but typically for larger projects. Please understand the difference. Easy STP is ideal. There is no alternative up to 50 KL. We are telling with our eyes closed because 50 KL के अंदर civil work करना भी मुश्किल है because the tanks will be too small and the project will be too small. So a builder should go for a ready-made project. Between 50 and 100, depending on site conditions, अगर काम चल रहा है तो builder can go for civil works. काम खत्म हो गया है, वहां पे कोई construction काम नहीं चल रहा है, तो they can go up to 100 KL for prefab. Anything more than 100, we recommend civil-based STP. Although I have customers who have taken 250 KL, 350 KL also in prefab STP, modular multiple numbers. The costing will be very realistic if it is below 100 KL. Very favorable if it is below 100 KL. Yes. 10 KL, 20 KL में तो अगर कोई सिविल में बंदा बोलता है तो उसके टच भी नहीं करना चाहिए. I was just talking to सूर्यवंशी. Right. ऐसे छोटे लोगों के साथ में काम नहीं करना है. Please understand. I have 25-30 years of experience in business. What I have learned in business is, especially in the last 5 years, we should know whom not to touch. इसके पास नहीं जाना चाहिए, ये बिल्कुल हमारे दिमाग में क्लैरिटी रहना चाहिए. If you start working with very small people, our life will remain small. Okay, sir? I have nothing against small people. Small builders के साथ में मुझे कोई खिन्नस नहीं है. But the point is, उनका सोच ही कम रहता है. वो 5 KL, 10 KL बोलेगा. Just now we were talking about some project where the requirement is 50 KL, the guy wants to install a 10 KL. So ऐसे दिमाग में वो शुरू करेंगे काम, तो वो आगे आपको पेमेंट भी नहीं देने वाला है. लास्ट 20-30 पेमेंट आपका अटक जाएगा. Right. And in my business, in my 24 years of water treatment business, every year I have been writing off 10 lakh, 15 lakh, 20 lakh, write off. खुशी से नहीं, because we are not able to collect. कितने लोगों के साथ में litigation में जाएंगे? बराबर. ओके, सो वो झंझट नहीं चाहिए करके ही हम लोग इजी एसटीपी में आ गए, जहां पे प्रोजेक्ट रेडीमेड है. मैक्सिमम एक्सपोजर इज लास्ट 10%. ओके, राइट. 90% पेमेंट आने के बाद में ही मटेरियल फैक्ट्री से डिस्पैच होगा. आई एम सजेस्टिंग दैट यू शुड कलेक्ट 100% मनी फ्रॉम द क्लाइंट. अदरवाइज क्लाइंट भी गया, पैसा भी गया. यस. दिस इज अ माइंडसेट ऑफ मोस्ट कस्टमर्स. वो सिर्फ यही बोलेगा. आई हैव सम क्लाइंट्स, some project company, we installed STPs in airport prefabricated easy STP. वो एयरपोर्ट का काम शुरू नहीं करता है, ये इंस्टॉलेशन कमीशनिंग नहीं हुआ है, 20% पेमेंट इज स्टक. 2 साल हो गया स्टक. बैंगलोर में
RGHCL में, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में, गवर्नमेंट के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अटका हुआ है। वो प्रोजेक्ट हाँ खत्म नहीं होता है, वो कमीशन नहीं होता है, हमारा लास्ट 20-30 परसेंट पेमेंट नहीं आता है। नहीं आता है, बराबर। इस वजह से मैं यही बोल रहा हूँ, हम कम लोगों के हाँ साथ में काम करेंगे, लेकिन जो बराबर है। आपके टर्म्स जो मैच करेंगे, सुनने के लिए रेडी है, उससे ही काम कीजिए। प्लीज डू नॉट राइट वर्क राइट विथ राइट। एवरीबडी। whoever is coming forward, he is not our client.